Hello, hello, guys. We are back. So let's continue. Best time to भाई ये पहला वाला तो आसान था निकल लिया सेकंड करते आई होपिंग कि अभी मैं पूरा सेकंड वाला खत्म कर दूँ तो ये सेकंड वाला खत्म कर दूँ ओके एक ही स्टॉक है उसके प्राइसेस है buy and or sell you can hold at most one share of stock at any time multiple times on the same day okay so I think same logic है since it was just once you have to do it multiple times right तो कहने से अभी मेरा प्रॉफिट क्या है ज़ीरो बाय प्राइस मेरा क्या है प्राइसेस ऑफ ज़ीरो और आई इन रेंज वन से लेके लेन ऑफ प्राइसेस तक राइट व्हाट इज इफ आई वांट टू सेल दिस इफ आई वांट टू आई वांट टू सेल ऑन दिस डे आई विल लाइक ओके तो मैक्सिमम प्रॉफिट आई नो इस डे तो इस पे कितना कमा सकता हूँ अच्छा दैट इज अ थिंग राइट ओके 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 सो द मेन प्रॉब्लम वुड बी लेट्स से तुम प्राइस वन पे खरीदते हो राइट फिर तुम फाइव पे बेचते हो बट उसे फाइव के बाद में टेन पे बेचता था तो आई मीन बट दैट्स नॉट पॉइंट राइट द पॉइंट इज यार तुम्हारा अगर वन पे तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता नाइन का लेट्स से तुमने वन से फाइव पे बेचा प्रॉफिट कितना हुआ फोर राइट उसके बाद फाइव को खरीद लिया बेचा खरीद लिया खरीद उससे कितना प्रॉफिट हुआ फाइव तो फाइव प्लस फोर टोटल नाइन प्रॉफिट हुआ इस केस में भी दैट्स द मेन लॉजिक तो वी कैन से if is it possible to even sell it with these prices of I is equal to prices of I किसकी equal है भाई बताओ if this is greater than the buy that means कुछ profit हो रहा है let's book that profit man let us book that profit plus is equal to prices of I minus the buy price right we book that profit that's nice profit book करने के बाद ओके नाउ अब तुम कब खरीद सकते हो यू कैन ओनली प्राइसेस ऑफ आई पे खरीद सकते हो राइट एल्स कहने से एल्स क्या लिख रहा हूँ मैं एल्स पढ़ूंगा एल्स व्हाट डज इट मीन अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो नहीं रहा तो फायदा है नहीं बट मे बी तुम खरीद सकते हो राइट सो जस्ट अपडेट योर बाय राइट एंड देन एंड में वी कैन रिटर्न प्रॉफिट आई थिंक yeah that seems to be working yeah lovely good आई मीन स्टार्टिंग के तो इजी इजी है लाइक मेरे को तो ये भी थोड़ा आई आई थिंक दिस फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है बट सेकंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई थिंक सो दिस टू इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई ऑनेस्टली थिंक लेट्स सी थ्री पे
Return the maximum profit you can achieve. You can do at once. You must sell the stock before you buy again. मतलब तुम्हें सेम डे पे खरीद के बेच सकता हूँ या नहीं? अ, मतलब सिर्फ मैं दो ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ. ओके, दैट्स फाइन. और डज इट मीन साइमल्टेनियसली? लाइक एक एग्जांपल है. लेट्स से 1 पे खरीदा, राइट? उसके बाद तुम 10 पे बेच सकते हो. लेकिन उसके बाद तुमको खरीदना है, so तुम 20 पे बेच सकते हो. तो प्रॉफिट इज 9. इसको जीरो ले लो क्या? लेट्स सी इसमें आंसर क्या देगा. 0, 10, 20. अच्छा, तो एक से भी तो कर सकते हो, है ना? सीधे एक तो से हाथ कम कर लो उसमें से. इसमें ये है कि I can do two transactions, right? Can I buy and sell on the same day? Let's see. ये 20 नहीं हो सकता, first of all. It has to be like something like 9. And so छोटा होना चाहिए, right? And let's say this is 8. This is like 4. Maximum profit क्या हो सकता है इसमें? 1 से 10, 4 से 9. मतलब buying and selling on the same rate is not really. If you buy that, right? Let's say X है, right? तुमने Y पे खरीदा Z. ये तुम्हारे 3 डेट्स है. तो टोटल प्रॉफिट तुम सीधे Y से Z जाते, दैट इज Z माइनस वाई, राइट? लेकिन अगर तुमने X कर लिया, दैट इज X माइनस वाई प्लस Z माइनस X, विच इज नथिंग बट Z माइनस वाई, राइट? सो दिस इज क्वाइट मीनिंगलेस टू बाय एंड सेल ऑन द सेम डे, क्योंकि उससे तुम दो अपनी ट्रांजेक्शन वेस्ट करा रहे हो. सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? सबसे पहले क्या ढूंढो? देखो, मैं पहले सोचा था जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन है वो ढूंढो. लेट्स से 1 से लेके 10 था, राइट? 1 से 10 था. हाईएस्ट प्रॉफिट एक एक ट्रांजैक्शन में. और फिर मैंने बोलूँगा कि उस सबको उसके बीच में सारा हटा दो, एंड जो बाकी बचा उसमें से वापस फाइल ढूंढो. बट उसमें दिक्कत क्या आएगी? लेट्स सी कि 1 से 10 था, राइट? मैं बोलता हूँ बीच में मान लो यहाँ पे क्या था. आई थिंक दिस माइट वर्क. बट कैन आई से 1 से 10 से मान लो दिस वाज द बेस्ट प्रॉफिट डे, राइट? अब अगर मैं ये चूज करना चाहता हूँ 1 से 10, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट हैज टू बी 9.
मतलब 10 से ज़्यादा नंबर में कोई चूज नहीं कर सकता, राइट? लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 था, एंड यहाँ पे कितना प्रॉफिट मैं बोलूँ, लेट्स से यहाँ पे था 8, लेट्स से 8 था, कितना प्रॉफिट हो गया 8 + 3, सॉरी 8 - 3 5, 5 प्रॉफिट हो गया इसके बीच। अब लेट्स से इसके बाद वापस गिर जाता है, एंड देन वापस 8 आ जाता है, राइट? 1 से 10 हाउ मच प्रॉफिट, 9, एंड दैट इज द मैक्सिमम जो कि मैं एक ट्रांजैक्शन में कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ये एक ट्रांजैक्शन करूँगा, इफ आई डू दिस वन फकिंग ट्रांजैक्शन, आई एम गोइंग टू लूज ऑल दिस प्रीवियस, उसके बीच का, एंड उसके बीच में आई एम लूजिंग 5 and 5 विच इज 10, दो ट्रांजैक्शंस। ओके, सो ये तरीका तो नहीं चलेगा। ओके, बट लेट्स से एक एरे बना देते हैं, इससे कितना प्रॉफिट तुम बना सकते हो ऑन ईच डे। पहले दिन पे तो 0 है, सो वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n, वैसे इफ आई वांट टू सेल दिस, व्हाट इज द बाय प्राइस, बेस्ट बाय प्राइस देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर मी? ओके, आई डोंट नो मैन, व्हाट इज द बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर यू? तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन तो वही है कि dp ऑफ i इज इक्वल टू मैक्स ऑफ dp ऑफ i, कॉमा, दिस इज वन ऑप्शन जो किसी पहले तक आ रहा था, वही रखो भाई। लेकिन जैसे सही सर एक ट्रांजैक्शन का है ना। ओके, सो डू आई नीड टू ट्रांजैक्शन वन, अभी पहले ट्रांजैक्शन ने हमको कुछ नहीं दिया, राइट? सो एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि तुम्हारा इस प्राइसेस के लिए जो भी बाय प्राइस था वो, प्लस उससे पहले की जो भी बेस्ट तुम्हारी ट्रांजैक्शन है वो, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, then I can I say buy is minimum of buy of prices of I, and transaction one is going to be nothing but max of transaction one। क्या हमने जो अभी ट्रांजैक्शन करी, is that, can that replace that fucking transaction one? बाय सॉरी बाद में होगा फिर। I don't think so, this is one of our, which I'm missing something, I am 100% missing something, I know that। okay, अब इज इट आंसर बड़े आ रहे हैं छोटे आ रहे हैं? 7 30 बड़ा आ रहा है, सो आई थॉट से बड़ा आएगा। वाई इज इट?
क्योंकि अगर मेरा जो ट्रांजैक्शन वन है, मेरा बाय जो है वो तो ट्रांजैक्शन वन के बाद ही आएगा ना, है ना? सो आई हैव टू बी लाइक, इफ ट्रांजैक्शन वन इज लेस देन प्राइसेस ऑफ बाय, मतलब अपना हमको एक बेटर ट्रांजैक्शन मिल गई एज अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सो उसको तो अपडेट कर दो। राइट, लेकिन अब मेरा बाय क्या होगा? आई कैन ओनली बाय ऑन, अब इसी डे पे तो बाय कर सकता हूँ प्राइसेस ऑफ आई पे। उसमें आई डोंट हैव द फकिंग चॉइस टू। ओके, टेक्निकली शुड बी आई प्लस वन, बट अगर मैंने वो कर दिया तो ये आउट ऑफ रेंज जा सकता है। बट टेक्निकली इट्स काइंड ऑफ यूजलेस ना। हाँ, लेकिन दो ट्रांजैक्शन में अगर फर्क कैसे डरा? क्यों? तो ये तो वो था अगर मैं ट्रांजैक्शन वन को लेके चलूँ, अगर मेरे को लेना ही नहीं ट्रांजैक्शन वन तो इफ आई से बेस्ट बाय एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो बेस्ट बाय तो हमेशा मिनिमम ही रहेगा। बेस्ट बाय इज मिनिमम ऑफ बेस्ट बाय कॉमा बेस्ट बाय एंड देन प्राइसेस ऑफ आई। एंड यहाँ पे आई कैन से कि एक ही ट्रांजैक्शन कर भाई, डोंट टेक अनदर ट्रांजैक्शन, डू वन ट्रांजैक्शन ओनली, बट उस ट्रांजैक्शन में क्या कर, सबसे बड़ा ढूंढ, दैट इज गोना बी प्राइसेस ऑफ आई माइनस, माइनस क्या? बेस्ट बाय। fucking hell man, it fucking worked. Okay, I want some test cases. Fucking hell नहीं, आई मीन टीएल ही तो नहीं आएगा, है तो मेरा वो ऑफ है नहीं, बट अगर इतने बड़े पे सही काम कर रहा है देन प्रोबब्ली सही होगा सोल्यूशन। नेवर फकिंग भाई, दोनों टेस्ट केसेस में गलत है, fucking। Okay, so what could be the mistake? I am still not sure about what is the plan. एक तो ये तो है, चलो एक ही ट्रांजैक्शन करो बेस्ट, राइट? वरना यू वांट टू डू टू ट्रांजैक्शन, लेकिन तुम्हारा मेन एफर्ट किस पे, ट्रांजैक्शन वन को सबसे बड़ा रखने में। तो अगर मैं अपने वाले टेस्ट केस में
चलाऊँ 1,3,8,3,8,10. ओके, मेरे टेस्ट केस में भी मेरे में 14 का प्रॉफिट हो सकता है। 3 से 10 बेच देते हैं इसमें 7 के लिए। मेरे हिसाब से तो 5 का ही हो, 10 का ही हो सकता था उधर। अच्छा, 1 से 8 बेचा, 3 से 10 बेचा। 1 से 8 7, 7 एंड 7 14। ओके, सो लेट्स सी क्या दिक्कत क्या है। हम्म। Can I say कि 138 3 certain right? I don't care about all that. What I do fucking care about is now the thing is you can complete at most 2 transactions, right? और एक्चुअली मार्केट को आई माइनस पर हाँ हम बाई को अपडेट कर देते हैं। लेट्स सी डीपी क्या है। पहले पे 0 प्रॉफिट, दूसरे दिन पे 1 प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट। इस दिन पे 8 माइनस 1 7 का प्रॉफिट बना दिया। दिस करेक्ट। अब इस दिन पे what is the max profit I can make? 1.
The max profit is I think 7 only. And then यहाँ तक 10. यहाँ तक तो पक्का 10 है, I know that. अच्छा 10 थोड़ी है. 10 तो 38 प्लस 38 हो गया. लेकिन मैक्स प्रॉफिट क्या है? 1 प्लस 8. 1 प्लस 8. 8 मतलब 7. ये 5 एंड 7 तो 12 तो इधर आना चाहिए. जब मैं यहाँ आता हूँ देखता हूँ या तो 7 होगा या फिर बेस्ट कर लो 8 माइनस 1 जो 7. वो भी करा नहीं इसमें. What the hell? What the hell? मैं जब इधर आता हूँ 8 पे. प्रिंट बाय ट्रांजैक्शन 0 not this way. 0 1 2 3 4 3 and 5, right? So it says what is the best price to buy? It's 3. That's true. And best transaction 5 क्यों है? 7 क्यों नहीं है? 8 and minus 1, right? 7. अच्छा क्योंकि मैंने बाय अपडेट कर दिया 3 माइनस 1 पे. ओके. तो इससे पहले की बेस्ट ट्रांजैक्शन क्या है? दैट इज प्राइसेस माइनस बेस्ट बाय. बाय इज ट्रांजैक्शन 1 के बाद का बेस्ट प्राइस, राइट? लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन को दिस हैज टू बी मे बी बेस्ट बाय. दैट मीन्स प्राइसेस माइनस बेस्ट बाय. दिस इज नाउ बेटर ट्रांजैक्शन. So best buy is the best transaction one, and then उसके बाद अब buy can be whatever, right? Otherwise this is not the best transaction one. Let's try this. Okay, yep, that was the problem. Okay, कुछ चीज़ हटाना भूल गया. But I got a wrong answer anyway, so it doesn't matter. Okay, let me print इसका भी DP. क्या दिक्कत है? Let's see 7 का प्रॉफिट बना सकते हैं. Let's see कैसे. जैसा buy at 1, I sell at 3, profit 2 का. Then 2 plus 7 is 5. Profit 5. Uh, 5 and then 2 which is 7. 7 is correct answer. Okay. Okay. Okay, this is fine. So हम क्या कह रहे हैं? पहले 0 फिर 1 है तो प्रॉफिट 0. जैसे 3 आता है I'm like what was the possibility? यही है 3 plus 2. I'm like 2 कर दो करेक्ट है. अब 2 आया.
यू कांट सेल वो है, यू कैनॉट फकिंग सेल, तो टू कर दो। अब लेकिन फोर आया। ओके, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? फोर आते ही वी फकिंग मेड प्रॉफिट एंड मेरा टू का प्रॉफिट, टू का प्रॉफिट। सो आई एम लाइक, यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? चार ही हो सकता है, आई थिंक सो। या चार ही हो सकता है, 1324। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे आने पे व्हाट इज माय ट्रांजैक्शन वन? 4 and 3, मतलब फोर ये है, वेट व्हाट? बाई इज फोर, ट्रांजैक्शन वन तीन का प्रॉफिट। ओके, ठीक है। विच इज करेक्ट, द बेस्ट ट्रांजैक्शन यू कैन हैव फोर तक, दैट इज दिस वन। लेकिन जैसे सेवन पे आते हो, अच्छा, तो सबसे पहले तुमने जब ये बेस्ट बाय करा, ये बेस्ट बाय किस इंडेक्स पे है? आई नीड दिस, क्योंकि इवन दो तुम ये कर रहे हो, देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी से पहले भी तो तुम्हारा बेस्ट होगा ना। ओके, आई थिंक वैसे कर सकता है, माइट हैव कॉम्प्लिकेटेड दिस शिट। यहाँ पे आई स्टिल नीड समथिंग विच इज गोइंग टू बी डीपी ऑफ बेस्ट बाय का इंडेक्स। सो बीबी इंडेक्स अगर मैं जीरो ले लूँ अभी, फॉर नाउ, बेस्ट बाय if prices of I is less than best buy, then best buy को अपडेट कर दो as prices of I, and BB index is equal to I। yep, एंड यहाँ पे आई नो कि BB इंडेक्स पे तक तो मैंने ले लिया, वो नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले क्या था भाई? उससे पहले का तो बताओ। उससे पहले का तुम्हारा आंसर होगा नथिंग बट बीबी इंडेक्स। बीबी इंडेक्स से तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ? क्योंकि मैं उसी पे बीबी इंडेक्स पे एक और खरीद सक बेचूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया और खरीद लिया। ओके, दिस ये वाला तब भी गलत है। अच्छा, सेवन का तो फिर वन आएगा ना, वन जो कि गलत है। सेवन का मेरे को टू से मैचिंग कराना है एंड वन का थ्री सेवन। आई मीन टू डी डी पी से तो टू डी डी पी नहीं, टू डी से बहुत इजीली हो जाएगा। इफ आई जस्ट मूव, सो मैंने भांग बोल करा।
दिक्कत क्या है? दिक्कत आई, मैंने पहले 1 एंड 3 पे मैं 1 पे लेके 3 पे मैंने भेज दिया, फिर मैंने 2 से 4 भी भेज दिया। ओके, लेट्स गो फ्रॉम द बेसिक्स। डीपी ऑफ या डीपी ऑफ जे, डीपी ऑफ आई, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव? या तो उसको लेमा जो पहले है वही रख ले, या फिर एक ट्रांजैक्शन कर बहुत बड़ी, प्राइसेस ऑफ आई माइनस बेस्ट, एक ट्रांजैक्शन। अगर मैं 2 ट्रांजैक्शंस करना चाहता हूँ, तो जो ये मेरी अभी की ट्रांजैक्शन है, व्हाट इज व्हाट इज इट गोइंग टू बी 2 ट्रांजैक्शंस के लिए? दैट वुड बी नथिंग बट प्राइसेस ऑफ आई, दिस विल बी नथिंग बट प्राइसेस ऑफ आई। इस पे तो मेरे को बेचना है, माइनस सम डेट, माइनस सम पिछले वाला बाय, प्लस उससे पहले का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट इफ बाय, बट दिस इज द एन स्क्वायर वाला, एंड आई फॉर श्योर कांट थिंक ऑफ अ वे टू डू इट इन में। 138 3 8 10, अगर मैं सबसे बड़ी ले लूँ, दैट इज, अच्छा वो तो 1 से 10 हो गया। द आंसर इज 1 से 8, 3 से 10। I might have to fucking watch the video. 2 मिनट तो मैंने पकड़ लिया। एक यूनिट ट्रांजैक्शन 1 सबसे बड़ा होना चाहिए, एक यूनिट ट्रांजैक्शन 2 सबसे बड़ा होना चाहिए। What can transaction 2 be?
आई नीड द बेस्ट बाय का इंडेक्स है ना, तो गलत क्यों आ रहा था उसमें? उसमें गलत आता कि बस फिर 7 पे आया। 7 से मेरे को बेस्ट बाय से नहीं लेना ना। नीदर इज ट्रांजैक्शन 1 द बिगेस्ट, इस केस में हमारा जो आंसर है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 7, जो तुमको सही आंसर दे रहा है उसमें नीदर इज ट्रांजैक्शन 1 द बिगेस्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 बिगेस्ट तो 1 से 4 है, and neither is transaction 2 the biggest, क्योंकि transaction 2 1 से 7 है biggest. Okay, so I don't know, I have to check it out. Okay, इतना जादू का आंसर था। Okay, साले ये वो बनाने क्यों बैठ गया? Fucking designing machines क्या कह रहे थे? जो भी I forgot. Automata and whatever, finite automata. Okay, so if I need 4 things, right? I'm gonna not do this way. Prices of I ले लो. Sell 1 is 0. Buy 2 is nothing but prices of I as well, and sell 2 is 0. For I in range 1 से लेके ln of prices, if I do this, what is the price is nothing but prices of I. Then what is the best buy one?
पहले तो सेल 1 करे ना। मैक्स और सेल 1 कॉमा प्राइस, प्राइस माइनस बाय 1, root cell 2. Maybe I should update by 1. By 2 is nothing but minimum of by 2. जगदीप कौन है लेकिन? Who the fuck is जगदीप सिंह? मैं तो जानता ही नहीं किसी जगदीप सिंह को। बिल्कुल भाई, गलत उपयोग तो हुआ है। So what is fucking by 2? By 2 is gonna be nothing but Jagdeep Singh Chadha. I don't fucking know what the fuck I am writing. I really do not know what the fuck did I just write. I have no clue what I am writing at this point. Yeah, I don't know what the fuck I write. Yeah, I have no clue. No clue. मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है। in the buy Yep. and sell stock category. And what does the third problem state? Before understanding this, the prerequisites are that you should have done the part 1 and the part 2. What was part 1? The part 1 stated that you will be given a prices and you're just allowed to do one transaction. So probably you could have bought over here and you could have sold it over here. Hence the profit that you'd have made was 4, correct? And with what was part 2? Part 2 said that you can do as many like infinite transactions, but just make sure you don't engage in multiple transactions together. So you could have said, I will buy here, I'll sell it here. So this is where you could have done 2 Yep. profit, buy here, sell here. आगे बढ़ाओ यार। 3 profit, buy here, sell here. 3 profit. So you could have made a total of 8 profit if you'd have gone by the part 2, because in part 2 you can do unlimited number of transactions. Just make sure none of the 2 transactions are overlapping. What is part 3? Part 3 states at max 2 transactions. Yes, at max what you can do is 2 transactions, not more than 2 transactions. Okay, so we are basically limiting the number of transactions that we are doing. So apparently if there was unlimited transactions, you could have gone this, then this, and then this. So you could have done 3 transactions to get the maximum profit, but over here you're limited. So how can you do at max 2 transactions? Probably you can say I can do this, I can do this, then you'll get 2, then you'll get 3, which makes it a total profit of 5. In this way you can do 2 transactions, or you can say I'll do a transaction here which will give me a profit of 2, I'll do a transaction here which will give me a profit of 3, hence I'll get a total profit of 5. Basically buy the stock here, sell the stock here,
buy the stock here, sell the stock here. It will give you a profit of 5. Or I can say is, hey, listen, buy here, sell here to get a profit of 3, again buy here and again sell here to get a profit of 3. In total, you can make a profit of 6. That means you can do these couple of transactions and you can make a profit of 6. And that's the maximum you can make. That's 3 minus 0 equal to 3 and 4 minus 1 equal to 3, which makes it a total sum of 6. And that is the maximum profit that you can make. Yes, that's the maximum profit you can make by buying here, selling here, buying here, selling here. So you'd have done at max 2 transactions. Now this problem is an extension of the buy and sell stock 2 problem that we did over there. If you remember, let's get back to the code over there. If you remember the recursive code, how did the recursive code look like? We started with the 0th index, right? And we took the buy initially to be you're allowed to buy, right? You took it as true. So yeah, you started with the 0th index and you said that you're allowed to buy. So that's how you started, correct? And then what you did was, if you're allowed to buy, you took that guy, and when you took it, it did add a negative value to you. It did add a negative value to you. Why? Because if you're taking that stock, that means you're investing money into the market. So the money is gone, thereby a minus. And then you said, I'll go to the next guy, I'll go to the next day, and this guy will be sell. That means you're not allowed to buy. 0 means no more buy. Now you have to sell. Okay. And what is the other thing? You say that I'll not buy on this day and I'll go to the next day with still giving him permission to buy. So if you're allowed to buy, either you can buy or either you cannot buy. That's how you will do if you're allowed to buy, right? And if you're asked that, hey, listen, I'm not allowed to buy, I'm allowed to just sell. So either you can sell. So if you sell from the market, you'll get this value back. So this is the value that you'll get back and you'll go to the next day. So if you have sold on the next day, you're again allowed to buy. You're again allowed to buy, right? And if you say that, hey, listen, I'm not interested to sell today, that means the amount that you'll get from the market is 0. You'll go to the next day and you're still able to sell and not able to buy. So that's how you can say sell or not sell. This is how the code was looking for the case where we had infinite transactions, That is the reason we just kept a track of day and buy. Now, if I am introducing something as an infinite transactions, I can do as many transactions as I wish, and I'm doing. But now, instead of infinite, I'm saying make it a 2 transactions. I'm putting a bound. So can you relate this to the knapsack problem where I'm saying, hey, listen, you can just do this much. You cannot do more than this. You're just allowed to do 2 transactions. So can I say, okay, fine, if I'm That is allowed a to do 2 2D transactions, problem. I can can I do relate the this same in code into something like 2D similar as code well when I to say work this index out, and but buy and I put a cap? Like this is the maximum number of transactions I can do. I cannot exceed these cap of transactions. So let's forget about the base case. Let's write the buy case if I'm allowed to buy, and let's write the other case if I'm not allowed to buy. So if I'm allowed to buy, what will I do? I will say if I buy, this is what I lose out on to the market for sure, because this is the price that I'll give it to the market. So that is gone from me. So minus prices of index plus f of index plus 1, and I'm not allowed to buy. So 0. In the next step, I'll go and do a normal sell. So the initial cap that you can pass is 2, and buy will be 1, and index will be 0, where 0 resembles the 0th day. Now tell me, if you're performing a buy, is the transaction complete? The answer to that is no, the transaction is yet not completed, because you're performing a buy. For a transaction to be completed, it has to be a buy sell. So the transaction is yet not completed, right? So what you do is you say, hey, the transaction is yet not completed, so please go on with the number of transactions that you had. Or else I can say, hey, listen, on this given day, I'm not interested to buy. So if I'm not interested to buy, can I say I'll take a 0? Plus f of, I'll go to the next day, right? And I'll say, I'll still be able to buy because I did not buy anything. And the transaction cap will be like, I'll still have the similar number of transactions. And what I will return is max of these couple of elements. As simple as that, I return the max of this, or the max of this is what I return back, correct? Now, what is about else? Let's quickly check out. What about else? Else means, you know what does else means? Sell. So let's try to sell. So if I'm selling, and I'll go to the perfect, which eventually means, or else you say that allowance, that's how a shuttle change, so that you can keep a track, like how long will you perform the transactions, keep the base case. Write the base case over here if you remember. We simply return a 0 on the market. Definitely not. So you get a return 0. What's the other case? If I also exhaust the transactions, will I get anything back from the market? No. So can I say these couple of stuffs will be my base case from the market? Convert the at most 8. And you will be trying out all possibilities using, go on to index plus 1. So this is the auxiliary stack space that you will be involving. There are these. So what we can do is we can definitely apply something as memo IH. We have this meaning. Thereby, you just need to create a DP state of n cross 2 cross 3. And if you're able to do this, you will be able to code this up. Now, this is kind of a 3D DP, you can call it. Just make sure you memorize in terms of index, buy, and cap before returning. That's what you just need to do in order to convert this into a memo IHN solution. And if you're able to convert this into a memo IHN solution, the time complexity of that solution will be n cross 2 cross 3, because
That's what you have over here, n cross 2 cross 3, and the space complexity will be obviously n cross 2 cross 3 plus the auxiliary stack space plus. So you can see this is UB there vector I don't in care prices about and in 10 is what you'll take. memorization. Right over here, you can say if index has reached n. So we saw that the tabulation. So we saw that the memorization code gave you a TLE, right? So what's the next step? Definitely we have to convert this into a tabulation, right? So how do you convert this into tabulation code? It's very straightforward. I told you the cases. You write the base cases. Just make sure you write all the base cases. The second, changing parameters. What are the changing parameters? I, buy, and cap. If you properly see, these three are the changing parameters. When you have an I, you have a buy, you have a cap, right? You write them in the reverse order. Next, you just make sure you copy the recurrence. You just make sure you copy paste the recurrence. Nothing different you have to do. Cool. Let's look at the base cases that you wrote. Let's come back into the memorization code. What are the base cases that you wrote? You said for any cap 0, any index n, either cap 0, either n. That means whenever cap is 0, index and buy can be anything. Index, I repeat, index and buy can be anything. If index is n, index and cap can be anything. Please hear me out properly. If index is n, index and 0, which means index buy can be anything from 0 to 1. So thereby the DP of index, buy, and cap is 0 because cap will be 0. That's the first base case that I'll write. Perfect. What is the second base case? Hey, will be 0. So it starts from yes, 2. So just buy, 2 transactions allowed. This is where your answer will lie. That's how you convert this into a proper tabulated code. So it's time to write the tabulation code. So what we will do is we'll just make it 0, right? And we know there are base cases, and the base cases will also have value. And honestly, yeah, this fucking makes sense. लेकिन ये space लेगा ना, constant space नहीं. As 0. So practically thinking, like there's no point because it's already assigned as 0 initially. So writing conditions for base case will not make any sense. Yes, I did write them in the iPad, but will it make sense because it's already 0 only. If this would have been 1 or something else, you would have written, right? So let's not write it. Let's quickly write the first thing, which is index. Where are we actually starting it from? 0. So we started from the opposite one, which is 1, and we go until 0, and we do index minus minus. And make sure this is somewhere around n plus 1. Okay, and you know there's other thing which is by. Where are we starting by from? 1. So you can just do it by equal to 0, by lesser than equal to 1, and start from 0 and start cap from 0. So do you need to compute for cap 0? The answer to that is no. So you can just compute for cap 1, okay? And you can ignore 0. You can start from 1 and you can go until 2. So now what's the next thing that you'll do? You will simply take this and copy paste over here. So let's quickly take this and copy paste with some tabulations. Okay, done. Now instead of return, it will be dp of this, and this will go under the else portion. Again, instead of return, this will be this. And what will be this? F of index plus 1, 0 cap. It will definitely be dp of index plus 1, 0 cap. Okay, and right over here you can just omit this portion, and you can have the other thing, which is dp of index plus 1 cap, and this is what you can easily do. And now you can omit this off. Index plus 1 क्यों चाहिए? That's how you can give this one, and this one also you can rewrite as dp of index plus 1, 1, and then you can write cap minus 1, and this portion is something which you can definitely remove, and you can write this as again dp of index plus 1 and 0, and you can write cap, and this is something which you can easily do, and now you can definitely remove this. So once you remove this, you know this will be dp of 0, 1, and 2, right? So let's quickly omit this off as well. Now try to run this and see this is running fine. Indeed it is. Now let's try to submit this off and see if it is accepted. Indeed it is accepted. So this is how you can easily change it into the tabulation format. So this is how the tabulation code looks like. Now you need to space optimize this. And I've told you, whenever you see something like this, index plus 1, index plus 1, index plus 1, index plus 1, you can just take it off and you can replace it with after that. Now over here we are using a 3D array as n cross 2 cross 3, right? And so this is the row, and then these other couple of guys can be treated as like you can treat them as single and you can treat them as single. Now you can visualize this as a 2D DP. So you just need to memorize this guy. So index plus 1 is what you need to memorize. Index plus 1. And this guy will be constant because these guys are constant. So you will just keep them. So what you'll do is you'll just go across and you will declare an after guy. Yes, you'll just declare an after guy. So just make sure you declare an after guy. So this is your after guy, definitely. And just copy paste this and say this is going to be my current guy. Perfect. And instead of dp of index plus 1, you say after. Instead of dp of index plus 1, you say after. Instead of again dp of index plus 1, you say after. And over here also you say after. Perfect. And instead of dp of index, you say current. Instead of dp of index, you say current. Once you have done the entire 2D calculation for this index, you say previous will get swapped, sorry, after rather. After will get swapped with current. And once it is swapped, you can say this is your answer, right? Or current, whatever you can call. So simple thing, I just made sure I did not change it. Same space optimization technique that we have been using in all the problems. We just make sure
we are taking care of these 2D variables instead of 1D. So once you do this, you can submit this and you'll see that this is giving you a correct answer. So this is the space optimized solution where you're definitely using a 6 size array, which is as good as a constant array. So I can say the time complexity is n into 2 into 3. 6 size कैसे? अच्छा ठीक है, पिछले वाले का ही चाहिए सो। अच्छा था तो वो लीनियर ही ना, मैंने 3, and the space complexity is constant because 2 into 3 is just a 6 size array. It's as good as a constant size array, right? So I can say the space complexity is constant as of now. So that's how you can do it. So there is another way of solving this as well. Let's understand that in the next part of the lecture. So guys, I hope you have understood this solution of memoization, which was n cross 2, and this was the solutions in different sites. What you'll see is there are a couple of other solutions which are also discussed. One of them is where they do not use this. Instead of that, they use an n cross 4 dp. Is they use an n cross 4 dp. That is one of the solutions. अभी वही And देख रहा the other था। one is where they use, yeah, 4 different variables. You heard that right? They use वैसे 4 different variables. हम बिफोर Now, आफ्टर करते this हैं। is something which I'll not teach. Why? Because this is not intuitive. I don't find this intuitive. I find the solution as something which someone tells me and I'm like, हाँ सही है. He's saying it correct. So that's why I like try to be like, yes. But I don't think the solution should be even discussed in an interview. You should not come up with this because the interview will never expect you to come up with this. Either you say the n cross 2 cross 3, either you say that, or either you go across and say the n cross 4 DP solution. They might be asking, hey, Trevor, what is n cross 4? Now, as of now, what did we do? We stated, let's start at the day 0, give him a permission of buy, and have a maximum cap of 2 transactions, and then keep on doing buy, sell, and whenever the sell is happening, do a cap -1. That's what we do in that's what we have done in this particular solution. But I'll not change it, I'll not code it, I'll just explain you the theory part. Probably you can code and submit. What if I say I will not have buy? Instead of that, I will have an f of index and a transaction number. So if I'm performing two transactions, can I say this means buy, sell, buy, sell? Can I say this? And if I number them, can I say them as 0, 1, 2, 3? Can I? I can. If I'm performing a buy, that's 0 or 2. Or in short, can I गिवन है say तो बाय। it's an even index, it's an even number. हाँ ठीक है, बट आई वाज होपिंग फॉर 4 वेरिएबल वाला की समझाए कोई मुझे। बिकॉज ये तो मैंने भी सोच लिया था, मतलब नहीं सोचा वैसे। इसका वाज अ बिट डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डू। What is the max thing you can buy for? Tell me man. What is the goddamn max thing that you can buy? अब देखना अगले वाला सेम होगा के ट्रांजैक्शंस के साथ ही। अब I fucking knew it man. But I guess के वाले में ये काम नहीं करेगा। Buy 2 is one with the maximum of sell 1 minus price. तो चलो अपने जरिए से करते हैं। लेट्स सी डीपी क्या है मेरे। प्रॉफिट मान लो मेरा कितना है, 0।
into buy or sell. To right. For dash in range 3012 कितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी है? Then I have to look for जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब से पहला दिन हुआ है, मेरा प्रॉफिट कितना है? जीरो हर जगह. Yes, I want to sell on this too. So for I in range n नहीं 1 से लेके लेन ऑफ प्राइसेस मैं इस दिन पे आया हूँ राइट. इस साइड पे कितना हाउ मच पावर डू हैव कैन आई बाय बाय इन रेंज टू फॉर completed for transactions done in range 3 0 1 या 2 राइट. अब मेरे को भरना है तो क्या हो सकता है मेरा? सबसे तो न्यू डीपी बनेगी राइट. न्यू डीपी इज इक्वल टू डीपी. अब इसके लिए what options do I have? If I can even buy, right? If can you buy? Okay, okay. We can buy. We can buy this. I don't think so. I need this thing. What I need is maybe. वैसे I don't think so. अगर दो ट्रांजैक्शन हो चुकी है तब तो अगर दो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं वैसे देन तो जो पहले था वही तुम्हारा मैक्स प्रॉफिट है. राइट. उसके बाद अब मान लो तुम्हारा नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है. Let's say if your transaction, right, and then we can continue with it.
The next thing is what what else condition do you have? एक second देना guys. Okay, I'm back. As I said, okay. Well now we have fucking transaction to do. Then can you buy? लेकिन फिर मैं कभी बाय करना तो प्रेफर ही नहीं करूँगा ना. इसलिए मेरे को बाय करना ही करना है, राइट? If I say, hey man, you have to buy only, no other option. Okay, then new DP of मेरे को खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, खरीद लेंगे. बाय. जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो गई है. What is that equal to? That is equal to nothing but new DP. DP जब तक नहीं खरीद सकते थे. एंड कैसे लिखते थे? फॉरगॉट फॉरगॉट. एंड तो इसमें तो ऐसे ही लिखते थे. नेवर फकिंग माइंड. और एक्सॉर जीरो होगा ना. 0 XOR 0 will give me 1. 1 XOR 0 will give me 0. राइट. तो तुम बाय जब नहीं कर सकते थे, मतलब हम टेक्निकली 0 भी कर सकते, डजंट मैटर. जब मैं बाय नहीं कर सकता था, what was the maximum profit? Minus what is the goddamn maximum profit इस स्टेज पे. तो इस स्टेज पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है जो भी तुमने खरीदा?
You could not buy. You cannot buy अभी. You could buy, you could not buy. What does it matter? What does it fucking matter? अगर मुझे बेचना पड़ गया मेरे पे कितना पैसा है. I'm like I have money in dp of 0. जब तुम नहीं खरीद सकते हो और तुम्हारी एक ट्रांजैक्शन कम हुई है, राइट? यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे ना बेच, पिछले वाले में बेचता हूँ. I don't know the fuck I wrote. I'm allowed to buy or not?
I don't know what the fuck I do. कहाँ पे है ये दिक्कत? What the hell? Uh, okay, as I thought, I don't know what the fuck I'm doing. मेरा दिमाग खराब हो गया. I want to stop stream. Oh, never mind, I'm not gonna. अभी तो 12:30 ही है. I thought 1 डेढ़ बज रहे होगा. That's the thing, right? I'm never gonna fucking buy. बिना खरीदे. You are allowed to buy. What is the maximum profit you can have? Of course, you're never gonna buy on that day. मेरे को फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी. So we are definitely buying. Either we buy or we don't buy. Plus efforts. तो उसके आगे हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है अगर मैं ये खरीदता हूँ? What is the maximum profit I can have if I'm allowed to sell? अभी उल्टा क्यों चल रहा है मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया.
अगर if you can buy, okay, I'm gonna be like, so if I decide to buy, right, what's gonna be? If I do not buy at this price, the maximum profit I can have when I still have the option to buy, right? I go index plus one, you still have, okay. Can you buy? Yes, you can still buy. Capacity is the same. Otherwise, if you decide to buy, तो आपका पैसा नेगेटिव जाता है. But now you see कि अब आपकी when you have the capacity to sell, तो तुम लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हो. Okay. Otherwise, else, 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 else. Okay. अब मेरे को बेचना. I need to sell. If I need to sell, what does it mean? What does it fucking mean? तुमने बेच दिया. अब पैसा आ गया. प्लस क्या तुमने? अब तुम्हारे पास वापस कैपेसिटी टू बाय है. कितना कर सकते हो? ओके. जी. या फिर तुमने नहीं बेचा तो तुम पे अभी भी बेच सकते हो तुम. ओके, लेट मी ट्राई. If I fucking keep this as same, तो पहले ओके. ओके ओके ओके. तो आई एम लाइक, ठीक है. ठीक है, एक बात बताओ मुझे. ट्रांजैक्शन में if not buy, we have to sell. What option do I have? What option do I have? If you have to sell, you have to sell. You of course have to maximize your profit. You can either go prices, hey brother. लेकिन if I decide not to sell, बाद में sell करूँ. तो बाद में sell करने के लिए जब when I will go index plus one, I do not have that value. तो index तो I think पीछे से ही जाना पड़ेगा. Then of prices minus one, minus one, minus one. तो do I really, जब मेरे पास सिर्फ एक इंडेक्स है, this is the question, right? ये बंदा तो कर रहा है. I don't know why though. Why is he considering n minus one? क्या वो बेस केस नहीं है? New DP. They'll do DP, whatever, whatever.
I'm gonna be like, भाईजान भाईजान मेरे हाँ नहीं चलो चलेगा चलेगा ठीक है सो लेट्स सी अगर सारे दो के दो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तब तो जो पहले था वो पढ़ो और आगे बढ़ो राइट अगर दो ट्रांजैक्शंस नहीं हुए एंड यू नीड टू बाय जैसे वी नीड टू बाय सो तो तुम बाय कर लो टेक दिस तुमने ये पैसा खर्च करा लेकिन ये खर्च करने से यू हैव नाउ द ऑप्शन i+1 में जाओ अब तुमको क्या करना था यू नीड टू सेल राइट यू नीड टू सेल सो जीरो एंड सेम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें चेंज नहीं होगा राइट ये तुम्हारा एक ऑप्शन है या फिर जीरो प्लस डीपी ऑफ इफ यू डिड डिसाइड टू बाय तुमने जो पहले खरीदा हुआ था उस पे प्राइसेस ऑफ ये तो वही होगा ट्रांजैक्शन डन राइट एल्स न्यू डीपी ऑफ जे इफ यू हैव टू सेल तुम बेच बेच दो इतना पैसा तुम ले रहा है अगर यू हैव टू सेल अगर तुमने ये बेचा इसका मतलब इससे पहले क्या था यू हैड द ऑप्शन टू बाय मतलब डीपी ऑफ वन और एक ट्रांजैक्शन कम भी होगी राइट तो डीपी ऑफ क्या होगा यू वांट टू सेल यू वांट टू सेल यू वांट टू फकिंग सेल दैट मीन्स उससे पहले क्या है डू यू हैव द इफ यू डिसाइड नॉट टू सेल उससे पहले तक जो भी प्रॉफिट था वही था मतलब मैं इसके फ्यूचर में बेच सकता हूँ तो अगर मान लो मैंने फ्यूचर में बेचा बेचा मतलब ज़ीरो सेम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए ओके तो तुमने बेचा
बेचने के बाद अब तुम खरीद सकते हो। तुम खरीद सकते हो। Okay, right. If I decide to do what? Sell. या तो मेरे पे ऑप्शन है कि बेच दो या फिर फ्यूचर में बेचूं। फ्यूचर में बेचना मतलब डीपी। सॉरी, फ्यूचर में आई कैन बाय। ठीक है, फ्यूचर में खरीदूंगा और एक ट्रांजैक्शन कम होगी। दिस इज माई वन ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज मत बेचो। फ्यूचर में तुम बेचना एंड सेम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी। ओके। ओके। अगर मैं खरीदता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं अभी खरीदूं और फ्यूचर में मेरे को बेचना हो, आई हैव टू सेल। आई हैव टू फकिंग सेल। फ्यूचर में बेचने के लिए दैट मीन्स या फ्यूचर में मैं बेचूंगा उतनी ट्रांजैक्शन से, या फिर मैं अभी नहीं खरीद रहा तो मैं फ्यूचर में खरीद सकता हूँ। ओके। एंड देन वी कैन से डीपी इज इक्वल टू न्यू डीपी एंड देन कैन आई जस्ट रिटर्न डीपी ऑफ टू एंड देन थ्री। थ्री नहीं, सॉरी, वन एंड टू। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। जे कहाँ से आ गया? ये इतना आदत हो गई मेरे को टू डी डीपी का सवाल करते करते। ओके, I still have fucked up something. अगर सेम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। What seems to be the problem? What is wrong for lead code? I don't see.
fuck, ये 2D है, so I need to go for the row of this or row in div. और क्या गलती है? Non transaction selling. अच्छा पहले तो -1 नहीं होगा ना, +1 होगा, क्योंकि तुमने अब एक ट्रांजैक्शन और कर ली। वेस्ट यप ओके, आई गेस दिस फकिंग वर्क। तो तुम्हारा बेस केस क्या होगा? तुम्हारी 0 ट्रांजैक्शंस हुई अभी, ऑफ कोर्स, एंड डू यू हैव द एबिलिटी टू बाय, एंड तुम आई किस पे हो? यप, तुम इस आई पे हो, यू हैव द एबिलिटी टू बाय, एंड ट्रांजैक्शन डन इज 0। यही है। होली फकिंग हेल, फाइनली आई डिड इट। दिस शुड किल मी, बट what doesn't, I mean it didn't kill me. What doesn't kill you makes you stronger. Cringe बातें कर रहा हूँ मैं, but okay. To solidify my whatever shit, let's do this cave transaction. Okay, right? So it's pretty easy. DP is equal to कितनी transactions हो चुकी है, and can we buy or sell? Can we buy or sell for dash in range 0 1 2, right? Okay, for I in range len of prices -1 comma -1 comma -1, न्यू DP बनाओ, रो का पूरा ले लो, और रो इन DP. अब now I can say for buy in range 0, so buy in range 0 1 0 1, for transactions done in range के, तो हमको के चाहिए होगा ना, 0 से के ट्रांजेक्शन, so we need k plus 1. Now I can go for k plus 1 here. If transactions done is equal to k, then new DP of जो भी buy and transactions done थे, that is going to be nothing but, अगर तुम, तब तो सेम ही रहेगा ना, it's why I can continue, then just continue.
राइट? अगर पेट्रोल रहा है सर डन, व्हाट डज इट मीन? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की। अगर मेरी कुछ औकात ही नहीं है करने की, अगर मेरी कुछ बस की ही नहीं है, मतलब मैं आई पे आया तो मेरी सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी थी, मतलब मैं आई प्लस वन पे जितना होगा वही होगा मेरा आंसर। तो आई कैन जस्ट एक्चुअली रिमूव दिस के एंड गेट दिस थिंग। एंड अगर मेरा के है ही नहीं, सो आई डोंट नीड के प्लस वन। रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, इफ आई कैन बाय, इफ आई कैन बाय, ओके, then new DP for this buy, and then total transaction done is going to be the max of what the first option is. You buy, you buy. If you decided to buy, plus if you decide to buy, that means future में sell करना है, तो future में not not buy, we don't buy and we sell, and total transactions same होगी। या फिर future में we buy in the future and अपनी आपस total transactions again same होगी। else new DP of buy, हमारा total transactions done, equal to max of, ओके अब तुम सेल कर रहे हो। इफ यू आर फकिंग सेलिंग, देन इट मीन्स या तो तुम सेल करो, अगर तुमने सेल कर दिया, सो योर मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन यू हैव टू बाय, व्हेन यू हैव टू बाय, यू हैव टू बाय। अब अगर तुमको बाय करना पड़ गया तो, लेकिन तुमने सेल करा है, राइट? तो तुम्हारी टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हो चुकी है? प्लस वन। एक ट्रांजैक्शन कर चुके हो तुम। राइट? इफ यू डिसाइड टू बाय हो रहे, मतलब अगर तुमने सेल कर दिया, मतलब एक ट्रांजैक्शन हो गई, फ्यूचर में जाओ, बाय करो। या फिर तुमने बोला ना मैं बेच ही नहीं रहा, मैं बेच ही नहीं रहा, तो फ्यूचर में जाओ एंड बेच दो। अगर मैं खरीदना हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, फ्यूचर में जाओ एंड बेच दो। नहीं खरीद रहा, फ्यूचर में जाओ खरीद लो। राइट? एंड ये सारा निवास डीपी इज इक्वल टू न्यू डीपी, एंड देन आई कैन रिटर्न डीपी ऑफ, अब मेरा आई जीरो है, आई कैन बाय, यस आई कैन बाय, कैन आई सेल, कितनी ट्रांजेक्शन डन है? जीरो ट्रांजेक्शन डन है, एंड आई थिंक दिस इज लवली शिट। ओके, तो मेरे को आई थिंक फाइनली थोड़ा समझ आ गया ये वाली प्रॉब्लम। द डीपी यूजुअली
Usually I would only think 2D DP. Like I fucking know knew कि 2D करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मेरा 2D सिर्फ n था. I did not think of these parameters कि बाय कर सकते हो नहीं कर सकते, कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है. और ट्रांजैक्शंस का तो सोचा था बट नॉट ऑफ बाय. सो मैं वो आई कुड नॉट थिंक दैट दीज कुड बी अ स्टेट वेरिएबल्स. तो मैं डीपी की स्टेट्स ही नहीं बना पा रहा था ढंग से. तो इसलिए आई वाज फकिंग स्ट्रगलिंग बिकॉज आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि ये भी स्टेट वेरिएबल्स का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्टेट वेरिएबल. ओके. राइट. सो इट्स सेइंग कि मतलब बाय एंड सेल 2 है एक्सेप्ट. ओके. ओके. मतलब अगर बेचा, आई कैन नॉट बाय स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे. इसका प्राइस 5,000 ही है. तो कैन आई डू इट इन एन स्क्वायर?
right? So I want to be like, can you or can you not? So a fucking brute force से kind of I think इसको क्वेश्चन भी कर सकते होगे but if I have to do it in a linear way, right? एक सेकंड देना. If I do it in non-optimized way, right? So I can say for I in range 1 से लेके n तक, if so I'm trying to sell it, right? Okay. For buy in range, अब तुम खरीद के अगर तुम इस दिन बेच रहे हो तो यू कैन बाय ऑन एनी फकिंग डे इससे पहले, राइट? तो इससे पहले खरीदने के लिए आई -1 से लेके -1 इस दिन पे खरीद रहे हो. प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो? प्रॉफिट हुआ तुम्हारा डीपी ऑफ सॉरी प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ बाय, राइट? दिस इज योर टोटल प्रॉफिट. Out of this total profit, if buy is so let's say अगर तुम आई एच पे बाय करते हो, राइट? तुमने बाय करा फिर कुछ कभी से सेल करा, तुमने यहाँ पे बाय करा है, दैट मीन्स तुम सेल कब हो सकता है? दिस कुड बी द सेल. या तुम सीधे यहाँ पे अगला बेच सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो -2, राइट? इफ -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हाँ, मतलब खरीदा जा सकता है. तो प्रॉफिट में ऐड कर दो डीपी ऑफ बाय -2, राइट? एंड देन आई कैन से dp of I is equal to max of dp of I से लेके जो अब मेरा प्रॉफिट बना, एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न dp of n-1. ये मेरा ओरिजिनल था, राइट? दिस वाज द थिंग दैट आई वाज थिंकिंग द फर्स्ट, मतलब 2n फकिंग हेल का गलत हो गया, 1 4 and 2. अच्छा, एक और ऑप्शन भी होगा ना, या तो ये करो या तो पिछला वाला कर लो. लेट्स सी, या तो कुछ करो ही मत इस दिन.
Yeah. But of course, this is quadratic, not very fucking efficient, timely. So what he says, okay, okay, that's fine. अब तुम्हारा क्या पार्ट है? डीपी बनाओ 0 into n. I don't need into n, right? तुमको जस्ट एक फ्यूचर में देखना है, so you don't care about n. Can you buy or can you not buy? I think that's all we need. जस्ट अगला, so dp1 चाहिए होगा मेरे को, which is just अगले वाले का, अ, या फिर dp2 चाहिए होगा, is also the same अभी के लिए. I can say for I in range n minus 1 से लेके -1 होता है या नहीं? हाँ, टेक्निकली ऐसे भी कर सकते हैं, बट यू नो यू डोंट रियली नीड टू डू दिस. आई कैन जैसे 0 into 2 0, 0 for by in range 2, right? If I can buy, what does it mean if you can buy? तो न्यू डीबी बनाते हैं, right? What does it mean if you can buy? So मेरे पास two options है, right? New dp or buy is equal to max or I have two options or not? I have two goddamn options. What are those two options? I'm gonna be like, those two options are nothing but या तो तुम खरीद लो. अगर तुमने खरीद लिया, that means you can sell, but can you actually fucking sell उसके आगे? No, you can't. You cannot sell. तो रख लेते हैं इसको ज़रा. अगर मैं खरीद सकता हूँ, तो अगर मैं खरीदता हूँ, सो जस्ट नेक्स्ट वाले में तो मैं देख ही नहीं सकता. तो मेरे को तो लिस्ट में नहीं चाहिए, मेरे को तो दो वो चाहिए. प्रॉफिट नेक्स्ट, प्रॉफिट सेकंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे नया प्रॉफिट निकाल देते हैं. प्रॉफिट नेक्स्ट होगा अभी के लिए. राइट. शुड बी नेक्स्ट प्रॉफिट या क्या करूँ? आई थिंक हाँ, मेरे को दे दो. अब जीरो पे रह लो, फर्क नहीं पड़ेगा.
या तो तुम खरीदो, अगर तुम खरीदते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट सेकेंड नेक्स्ट कितना था, लेकिन वो तो तब होगा ना जब तुम बेच सकते हो. Okay, I actually fucking need that shit. Okay, DP1 DP2 new DP. या तो तुम खरीदो, अगर तुम खरीदते हो तो DP2 में जाओ एंड देन तुम बेचोगे. तो बेचने में क्या है, यू कैन नॉट बाय नाउ, यू विल सेल, राइट. दिस इज द टू ऑफ दिस इज द वन फर्स्ट ऑप्शन. एंड सेकंड ऑप्शन हो, हमको खरीदना है, अभी मत खरीदो, फ्यूचर में खरीदना है. तो DP1 में गए फ्यूचर में एंड खरीद लिया, खरीद लिया. नोट राइट. एल्स अब तुमको बेचना पड़ गया. तो अगर तुमको बेचना है, या तो इस प्राइस पे बेच दो, इस प्राइस पे बेच दो एंड फ्यूचर में तुम्हारा जो भी मैक्स प्रॉफिट बन रहा है वो ले लो. लेकिन अगर तुमने इस प्राइस में बेचा, यू तुमको वो कूल डाउन लगेगा. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी कूल डाउन लगेगा, राइट, क्योंकि खरीदने के बाद तो कोई कूल डाउन नहीं लगता, बेचने के बाद लगता है. तो यहाँ पे तुमने बेचा, यू सोल्ड, अ फ्यूचर में यू नीड टू बाय, कॉमा, यू डिसाइड नॉट टू सेल अभी. तो भाई यू नीड टू सेल अब फ्यूचर में थोड़ा. राइट. एंड देन can I say new DP, I mean sorry, DP2 is equal to DP1, and then DP1 is nothing but new DP. I think so. Return DP1 और हम स्टार्टिंग में आ गए है ना. स्टार्टिंग में आने के बाद क्या मतलब है इसका, कैन वी बाय वन, कैन नॉट बाय, वी कैन बाय वन. should we will this work, looks like it is working. Okay, it works, perfect, lovely. so एक और सवाल हो गया. आई डोंट नो 63 और 64 या जो भी हो, बट गुड वन. लेट्स सी, क्या मैं ये करके ख़त्म कर सकता हूँ. I mean, this was a new way of I really have to think about the state variable. मतलब if the profit is not worth the selling fee, we just don't sell, right? I mean कि कुछ सीन नहीं है. वैसे buy is nothing but prices of zero, then I can do a loop for in range 1 से लेके लेन of prices. I can store the total profit is nothing but zero. I can say if I want to sell on this rate, my
profit, should I even first of all sell? If prices of I minus buy minus my fee, if this is a profit, I can say sell it, book the order and profit. But ओके अब एक बड़ा सा बट आ गया ना इससे इससे 1 से 5 4 का प्रॉफिट भी सोल्ड अनदर 4 का प्रॉफिट इज 9 राइट यहाँ से I could have 8 minus 2 is equal to 6 का प्रॉफिट लेकिन I had 4 minus 2 and then another 4 minus 2 का प्रॉफिट ओके so even with my transaction fee if I say uh, if I make a DP error ठीक है I think that's fine pretty much same here argument that's the good thing right उसने जो बोला that is not intuitive मतलब उस एक चीज के लिए चल रहा है but does it want to work every place maybe not that's it man sell or not sell right that's all I fucking need for I in range len of prices minus 1 comma minus 1 comma minus 1 we can say we can make a new DP which is nothing but DP अभी के लिए then I can say for buy in the range 2 what's gonna happen man 0 1 if we can buy new DP of buy you can buy okay what does it mean if you can buy I don't know you have two options right what are those two options if you can buy minus prices of I you bought plus you see into the future and see now you have to sell now you have to fucking sell right this is the first option or you decide not to buy and in the future you can buy right otherwise you want to sell you have to sell you have to sell sell is equal to buy we need to sell we need to sell right if we need to sell then what are the two options you have sell right now price sell right now pay the fee and then in the future into the future into the future you can buy not sell then you can just buy right just and do not sell in the future you have to buy in the future right is the first option otherwise the second option would be nothing but yeah, the second option is do not do not sell right now do not sell right now sell in the future sell in the future and then DP is nothing but new DP and then I can just return DP of can you buy yes you can buy at the start okay return lovely hopefully it works let's go it fucking works and this should be an linear O of n to yep O of n constant space O of n time बट अभी काफ़ी टाइम लगा
I don't care all that. Huh. Constant, but what I'm thinking right now is a fucking dumb thought. Not really dumb thought, maybe a beginner thought is the correct word. You had an array, right? Are you not making a new array, new DP? But doesn't new DP is equal to DP or whatever make a new array, new DP? We do this n times, so total space should be n. This is what I'm thinking. मतलब जो मैं सोच रहा था वो सही है, बट जो जो तुम जो तो ऐसे जैसे यू हैड डीपी के दो एलिमेंट्स, न्यू डीपी के दो एलिमेंट, जब तुमने उसको ओवरराइट करा, जब तुमने बोला डीपी इक्वल टू न्यू डीपी, तो जो पुरानी डीपी थी वो गार्बेज कलेक्टर ले गया, तो वो फ्री हो गया. You do not accumulate memory. That's the main point. You reuse it. Okay. Okay, that is what I think happens. I was not sure कि garbage collector खा जाता है कि नहीं. अगर वो नहीं खाएगा, so तब तब तो हम तब तो इन स्पेस होगी. If uh, hypothetically the garbage collector did not free up the old DP array after it was reinitiated, after it was rewritten, I guess the space will be in. Yep, yep. अब पाइथन में मेरे को होता है. So in which language does this happen without garbage collection? Okay. Okay. But C plus में भी जब free तो नहीं करते, what do we write? We just fucking write. हम बस references बदल देते हैं, I'm pretty sure. We just fucking हाँ, मतलब वो दो दो स्टार्टिंग में बना ली और बस उन दोनों की करंट और आफ्टर की वैल्यूज बदलते रहते. दैट्स हाउ दे डू. They do not do this thing.
Okay, very nice. Very, very nice. So 23.6 आया, right? अगर if I just control, if I do, if I just do this, new TPP में इधर बना दो. If I do this, then I am still doing this, new TPP फिर new TPP में वापस बनाऊंगा. This is also correct, I think. कितनी memory लगेगी? That's what I know. 23.6 से कुछ better? No, nothing, कुछ नहीं. Learn कुछ नहीं. Okay. So we are done with this. 64, I guess 64 ही थे. So, lunch break पे जाता हूँ मैं. I would be back in fucking थोड़े 1-1.5 घंटे में वापस आऊँगा. 1.5 घंटे मान लो. And hopefully I am hoping कि थोड़ा और आज कर ले. Okay then guys, bye.